morning, my dear students. So we have started with speed revision of your chapter number 12, that is your biotechnology and its application. In last video, we people have seen importance of your BT cotton. Then we have done your RNA interference. We have done your human insulin, and we have seen your gene therapy. Right now, moving ahead, today we are going to talk about your molecular diagnosis. Okay. If you're talking about your molecular diagnosis, right, then what is traditional, what is general diagnosis method? If you're having something, if you're suffering from some kind of disorder, say for example, you people are having fever, you people are having cold and cough, if you will visit doctor is going to prescribe you blood test or your urine test, yes or no. These are the traditional way for diagnosing some kind of infection that is done by pathogens. Pathogens here I am talking about your bacteria, I am talking about your viruses. Am I clear? So this kind of pathogens can be detected by this traditional methods like blood test, your urine test. But by the time you people show symptom and you visit doctor, the number of pathogen, the number of particular bacteria or viruses present in your body is very much high. When you people exhibit symptom, आप कब डॉक्टर के पास जाते हो? When you are having some symptom, yes or no? जैसे मैंने बोला आपको fever, cough, cold, ये symptoms है. Only then you are going to visit doctor and doctor is going to prescribe you blood test or urine test. By the time your body shows symptom, the number of pathogen in your body goes to millions. Am I clear? So, the latest trend is to do the same by molecular diagnosis. Molecular diagnosis in the sense, I am saying that if the pathogen is in very much less amount, if the pathogen is present in very much less amount, वो बहुत ही कम है, आपकी बॉडी ने कोई symptoms नहीं शो करा, if you are going for molecular diagnosis and if that pathogen is present in your body, this can be detected. So what is the advantage of your molecular diagnosis? Advantage क्या है इसका? You can detect pathogen in very small amount, in very small proportion without your body shows symptom. Am I clear? So यहाँ पे recovery time आपकी कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी. Am I clear? So for the same, we are using polymerase chain reaction. Now, what is polymerase chain reaction? You very well know that it amplifies gene. So, if in your chromosome, any other gene, any other genetic material of your pathogen is present, one can multiply, one can amplify, and one can know if you are suffering from disease or not. Okay. So if I am talking about your polymerase chain reaction, then this is used for detecting number of disorders including your HIV. Right, HIV virus which is responsible for causing AIDS. तो पहली जो मेथड मैंने आपको बोली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, वो क्या है आपकी PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विच एम्प्लीफाइज जीन. ठीक है. फिर सेकेंड जो मेथड आती है इज यूजिंग आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड, हाँ, दिस इज योर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA probe. देखो डियर स्टूडेंट्स, इफ आई एम यूजिंग द टर्म प्रोब, इसका मतलब ये होता है इट इज रेडियो एक्टिव. ये कैसा है? रेडियो एक्टिव. इट शोज कलर इन ऑटो रेडियोग्राफी. एम आई क्लियर? दिस इज अ टेक्निक for seeing your DNA. Okay. So if I am used to saying your single stranded DNA or RNA probe, right, this is allowed to hybridize with complementary DNA or RNA present in clone. अगर ये हाइब्रिडाइज नहीं होता तो आपको क्या पता चले? आपका जो जीन है वो म्यूटेटेड है, उसमें कुछ चेंजेस हुआ है. इस वजह से ये जो प्रोब है
It is not complementary, so it is not hybridized. Simple as that. ठीक है? And the third technique is called as your ELISA. Is called as your ELISA. If I am talking about your ELISA, then this test is based on antigen antibody reaction. Dear students, if any pathogen attacks your body, you people have understood immunity, yes or no? Yes. There will be development of antibodies in our body. इसको आप क्या बोलो? एक्टिव बोलो, पैसिव बोलो? प्लीज रिकॉल इट, है ना? पैथोजन आपकी बॉडी में चला, तो अगेंस्ट दिस पैथोजन, योर पैथोजन इज एंटीजन. पैथोजन क्या है? एंटीजन है. एंड अगेंस्ट दिस एंटीजन आवर बॉडी, आवर इम्यून सिस्टम, आवर आर्मी, आवर सोल्जर डेवलप्स एंटीबॉडी. ठीक है? तो ये जो एलिसा है, दिस इज एलिसा इज बेस्ड ऑन योर एंटीजन एंटीबॉडी reaction. Am I clear? So these are three that you people have to understood under your molecular diagnosis. ठीक है? Then comes your transgenic animals. फिर क्या आते हैं आपके? Transgenic animals. Okay. If I am talking about your transgenic animals, तो ये कैसे एनिमल्स है जिसके जीन्स आपने मैनिपुलेट करे हैं, आपने जीन्स चेंज किए हैं, अल्टर करे हैं. दिस आर कॉल्ड एज योर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, राइट? मोस्ट प्रोबेबली फॉर रिसर्चेस वी आर हैविंग ट्रांसजेनिक रैट्स. एम आई क्लियर? वी आर हैविंग ट्रांसजेनिक रैट्स. These transgenic animals are used for many purposes. Like number one, to understand normal physiology, to understand normal physiology and development, to understand normal physiology of our body and development. Normal physiology in the sense what? आपको पता है इंसुलिन क्या रिलीज करता है? सॉरी, पेनक्रियास क्या रिलीज करता है? टू बी मोर स्पेसिफिक, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करता है. व्हाट इज द एक्शन ऑफ इंसुलिन? वो भी आपको पता है. कैसे पता चला? By studying the same in transgenic animals. Am I clear? Apart from this, they are used to test vaccine safety. Okay. Then they are used for certain chemical testing. Okay. Even they are used for study of diseases. Okay. Even they are used to obtain biological products. They are used to obtain biological products. Am I clear? So these are the use of transgenic animal. Please read once again from your NCERT textbook, right? And the last point that comes under this chapter is ethical issue. Is your ethical issue. Okay. Now if you are talking about this genetic engineering, तो ये क्या करता है? Genetic makeup, genetic structure को alter कर देता है. Yes or no? Yes. Now such type of genetic manipulation cannot go beyond certain limits. There must be some ethics. There must be some rules to evaluate morality of human activities that may harm और हेल्प ऑर्गेनिजम्स. कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ लॉ होने चाहिए जो किसके ऊपर नजर रखे? ह्यूमन एक्टिविटीज पे नजर रखे. दैट में आइदर हेल्प और हार्म पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, मोरालिटी तो बात हो गई. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, इट कम्स अंडर योर रूल. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव टू सी बायोलॉजिकल सेफ्टी. What do you mean by this? If we are introducing genetically modified organism, there might be possible that it may bring some unpredictable changes in an ecosystem. Unpredictable changes in the sense what? हमने genetically modified organism create करा for our benefit. हमने introduce भी करा, लेकिन it shows some dangerous effects, some unpredictable change होते हैं, right? So for all this, our India have one committee that is your Genetic Engineering Approval Committee. Genetic Engineering Approval Committee. Am I clear? So ये very important है, right? This
will make decision about your genetic modification researches and application of genetically modified organisms. Am I clear? Now this creates issues with patents. Now what is patent? आपको पता है, जैसे मैंने कुछ इन्वेंट करा, then I can claim कि ये चीज मेरी है, जो भी प्रॉफिट हो वो पहले मुझे मिलना चाहिए. Yes or no? Yes, this is what I mean by patent. What do you understand by bio patent? लिविंग सब्जेक्ट को आप पेटेंट में लगाओ, तो दैट इज व्हाट आई मीन बाय बायो पेटेंट. एम आई क्लियर? इट कैन बी प्रोडक्ट, इट कैन बी डीएनए, इट कैन बी प्रोटीन, इट कैन बी एंजाइम, इट कैन बी मेथड को भी आप पेटेंट कर सकते हो. इट कैन बी स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, इट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट कैन बी एनीथिंग यू कैन पेटेंट. जो नॉवेल्टी है, जो इन्वेंशन है, यू कैन क्लेम फॉर द सेम. ठीक है, इंडिया में पेटेंट 5 years की लगती है, बट दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम. कैसा प्रॉब्लम? हम हमारी ही बात करें, इफ यू टॉकिंग अबाउट अवर इंडिया, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो वी आर हैविंग नियर टू अबाउट 2 lakhs varieties of rice, of which we are having 27 documented variety of your basmati rice. Right? It is very well known for its aroma, for its size of rice. Yes or no? Yes. अब यूएस ने इसके ऊपर पेटेंट लगाई है. हमारी प्रोडक्ट पेटेंट किसने लगाई? यूएसए ने. कैसा करके? उन्होंने क्या किया, कोई एक छोटा राइस लिया, मतलब सेमी ड्वार्फ वेराइटीज, उसको क्रॉस किया किसके साथ? हमारे इंडियन बासमती के साथ. एंड जो प्रोडक्ट मिली, उन्होंने ये बोला ये इन्वेंशन है, ये कुछ नई चीज हमने बनाई है. एंड दिस इज हाउ दे ग्रांटेड पेटेंट फॉर अवर बासमती राइस. राइट? आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? वैसी ही पेटेंट it is for our traditional plants, traditional herbs, that is your turmeric and neem. Am I clear? So again, this point is very much important, right? We need to have check over this thing. Apart from this, your last topic is your biopiracy. What do you understand by biopiracy? Piracy का मतलब होता है चोरी. Yes or no? किसी को पूछे बिना किसी की चीज यूज करना. Yes or no? Without proper authorization, without proper payment, if you are using bioresources of some other country, then it is called as your biopiracy. What it is said? It is said as your biopiracy. आ रही है बात समझ आपको? Yes or no? Yes, right? And to look after your patents, to look after your biopiracies, if I am talking about your Indian Parliament, then they have passed second amendment of Indian Patent Bill. Okay, they have passed second amendment of your Indian Patent Bill to look after this problems regarding patents and use of our resources by other countries. ठीक है? So dear student, this is your chapter number 12. हमने फटाफट chapter number 12 का रिवीजन किया. Now we will begin with neat portion of this chapter. ठीक है? I hope ये आपको समझ में आया. Thank you very much.